Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the cells die at the time of the release of the secretory materials. तो हमें बताना है ऐसा कौन सा सेल है जो डाई हो जाता है या जिसकी डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ द रिलीज ऑफ द secretory materials. तो ऐसा सेल जो अपनी secretory materials रिलीज करते ही उसका डेथ हो जाता है. वी हैव टू से व्हाट इज दैट सेल. We are provided with four different options. First option is holocrine gland, apocrine gland, merocrine gland, and the last one is the mixed gland. Okay, so if we talk about what is the key concept that we have to use in the question, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो key concept use हो रहा है that is basically the holocrine gland. Because अगर बात करें correct answer की then it will be the holocrine gland. चलिए बात करते हैं व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म दैट इज होलोक्राइन ग्लैंड. तो जब भी हम बात करते हैं होलोक्राइन ग्लैंड का सो वी कैन से इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड. ये एक मिक्स्ड ग्लैंड का टाइप है बिकॉज इट इज शोइंग द प्रॉपर्टीज बोथ ऑफ अ एंडोक्राइन ग्लैंड. तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड का प्रॉपर्टी भी शो करता है एज वेल एज इट इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? इट बेसिकली रिलीजेस इट्स सिक्रीशन इन द ब्लड. वो अपने सिक्रीशन ब्लड में रिलीज करता है. एंड अगर बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की तो इट रिलीज इट्स सिक्रीशन इन द डक्ट. फाइन. So these are the two properties that is shown by the holocrine gland. एक और बात करें what is the another characteristic of a holocrine gland, तो हम कह सकते हैं जो holocrine gland है जैसे ही वो अपने सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करता है. ओके, द टाइम इट रिलीजेस इट्स सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स इनटू द सिक्रीशन एट दैट टाइम द सेल विल डाई. ओके, सो जैसे ही वो अपने सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करता है एट दैट टाइम द सेल विल डाई. बिकॉज if we talk about the holocrine gland then we can say it is a cell that is only filled with secretory products. तो ये सिक्रीटरी प्रोडक्ट से फिल्ड होता है. दैट्स वाई जैसे ही इनमें से सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिलीज होता है दिस सेल्स विल डाई. दैट्स वाई हम कह सकते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है दैट इज ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए दैट इज द होलोक्राइन ग्लैंड विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ओके, चलिए बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की भी. इफ वी टॉक अबाउट द अदर ऑप्शन दैट इज द एपोक्राइन ग्लैंड. जब हम बात करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड की तो एपोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो जिसमें क्या होता है बेसिकली यहाँ से जो सिक्रीशन आता है दैट इज फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट. तो सेल का जो एंटीरियर पार्ट है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिक्रीशन. ओके, दैट्स व्हाई जब यहाँ सिक्रीटरी प्रोडक्ट का रिलीज होता है एट दैट टाइम द सेल विल नॉट डाई. तो इसमें सेल डेथ नहीं होता. ओके, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. अगर बात करें ऑप्शन सी का, हियर द ऑप्शन सी इज मेरोक्राइन ग्लैंड. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है मेरोक्राइन ग्लैंड में इन केस ऑफ मेरोक्राइन ग्लैंड द सिक्रीशन इज रिलीज्ड. बट यहाँ पे जो मेथड यूज होता है फॉर द रिलीज ऑफ सिक्रीशन दैट इज द एक्सोसाइटोसिस मेथड. तो एक्सोसाइटोसिस मेथड के द्वारा यहाँ पे क्या होता है द सिक्रीशन इज टेकिंग प्लेस और यहाँ पर भी सेल डेथ नहीं होता. दैट्स व्हाई दिस इज अगेन द इनकरेक्ट वन. मिक्स ग्लैंड, तो ये सारे 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 के सारे जो ग्लैंड्स है दे आर द एग्जांपल्स ऑफ मिक्स ग्लैंड. तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा. So from all these, we get to know that if we talk about the holocrine gland, so we can say holocrine gland is a type of mixed gland, or this is a cell that is filled with secretory products. और जैसे ही इसके secretory products release हो जाते हैं in the secretion, the cell death will take place. That's why if we talk about the correct answer here, then it will be option A, that is the holocrine gland. So from all these, we can conclude that the cells which die at the release of the secretory material is known as the holocrine gland. This is the final answer for our question. I hope you understood it well. Best of luck.